द मैजिक ऑफ स्टोरी टेलिंग फॉर यंग स्पीकर्स। सो आज हम शुरू करने वाले हैं स्पीकिंग और पब्लिक स्पीकिंग और स्किल्स के ऊपर एंड हाउ वी कैन लर्न दैट थ्रू स्टोरी टेलिंग। सो आई होप कि आप सब एक्साइटेड हैं और हम जल्दी इसको स्टार्ट करेंगे। बट as always, we will do that we always do in our sessions before we start learning. So let us begin. Let's understand about Gurushala first, which is Gurushala is an initiative of Indus Towers Limited and Vodafone Idea Foundation, and it is implemented by Pratham Education Foundation. So, for things to know, we will keep a pen and paper handy with us so that if there is anything to note, अगर हमें किसी भी चीज को नोट करना है तो हम उस पेपर पे लिख सकते हैं। दूसरा ये कि हम अपने माइक्स को म्यूट पे रखेंगे और कैमरास को ऑन रखेंगे सो वी कैन सी यू ऑल। यू विल कीप योर माइक्स ऑन म्यूट एंड योर कैमरा ऑन द चैट। शेयर योर थॉट्स। जो आपके साइड में एक चैट बॉक्स दिख रहा है, आप उसके ऊपर अपने कमेंट्स और अपने थॉट्स को लिख सकते हैं, either in English or in Hindi. Expert for the day. So I would like to welcome Sangeeta ma'am, who is a storyteller. So READ is an acronym for Read, Explore, Ask and Discover. And at the READ Club, curiosity is nurtured and creativity, empathy and a love for learning is always cultivated through stories and art. In the READ Club, it our creativity, develop a passion for learning, build social skills, and this is all achieved through a thought-provoking interactive storytelling session, collaborative workshops, and hands-on creative projects. So welcome, ma'am. Thank you so much for being here. I'm very excited to start the session today. So, children, are we excited to have a small quiz from Skippy the koala bear that we all have been seeing for the last 10-12 days? Okay. We will now have a small quiz before we begin. So I request Skippy to come and take this quiz for us. हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक होंगे। तो आप सब रेडी हैं आज की क्विज के लिए? देखते हैं आज कितने कर पाते हैं। तो मानसी मैम, क्या आप हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिखा सकते हैं? क्या है आज का फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन यू मेक अप अ स्टोरी ऑन द स्पॉट? ऑप्शन भी दिख रहे हैं हमें। इम्प्रोवाइजेशन, रीडिंग, राइटिंग एंड स्लीपिंग। क्या लग रहा है आपको? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में आंसर शेयर करें। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। हमारे पास ऑप्शन सी को लेके और ऑप्शन ए को लेके आंसर्स आ रहे हैं, ऑप्शन बी के लिए भी आ रहे हैं। तो देख का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। वेरी वेल डन, आप सभी ने तो सही जवाब दिया। चलिए देखते हैं कि आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। What is the term for beginning of a story? And beginning, introduction. क्या लग रहा है आपको? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। देखते हैं ऑप्शन बी। दो ऑप्शन आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेल डन। इसी तरीके से आप चैट सेक्शन में शेयर करते रहिए और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which part of a story has the most exciting events? Beginning, middle and boring part. क्या होगा करेक्ट आंसर? इस चारों ऑप्शंस पे आंसर आ रहे हैं। देखते हैं मानसी मैम किसका आंसर सही होता है। ओ, ऑप्शन बी सही है। तो जिन्होंने ऑप्शन बी बोला है उन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, लेकिन आपने कोशिश की, हम तो बजा ही सकते हैं। वेरी वेल डन। आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ
telling a story, to bore people, to share ideas and entertain, to confuse the audience, to keep secrets. क्या रहा है आपको? क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। देखते हैं क्या आप सब सही बता रहे हैं। बिल्कुल सही, वेरी वेल डन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या और कोई क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। ओहो, एक और क्वेश्चन। Is it called when a person speaks in front of an audience? Sleeping, dancing, public speaking, and eating. ऑप्शन सी पे आंसर आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। आप सभी ने तो बिल्कुल सही जवाब दिया इसका। तो मानसी मैम, आगे हमारे पास कोई क्वेश्चन है? ओ, आज के लिए तो हमारी क्विज यहीं पे एंड होती है। कल मैं जाऊंगा और आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाऊंगा। जब तक मैं चाहूंगा संगीता मैम हमें के बारे में और ज्यादा जानकारी दें। Okay, kids, that was wonderful. So many right answers and so quickly. I think we'll have to bring out more questions from tomorrow. So now let's begin today's session. I'm sure we're all excited. So, Sangeeta ma'am, over to you. You can begin. Thank you. Everyone, can you all hear me? Can you all hear me? Yes? Okay, can you give me a thumbs up? Yes. Mansi, just wanted to check, would they be able to talk, respond in words? Yes. Like Yes, unmute they can. if required. Okay. Yes, they can. Okay, fine. For now, we'll keep in chat, but yeah, later it may be required. Okay. Okay. So I'm so happy to see you all here today. So you all had lunch? Did you all eat food? Yes? No? Acha. So are you all fresh, energetic for the session? Okay. So anyway, let's start with a small warm-up activity. Are you all ready? Can you all open your cameras, switch on your cameras, please? Can all of you switch on your cameras just for 5 minutes? Game. I want you all to be filled with energy now. Okay? Yes? Come on, I'm not seeing some of the cameras are not on. How will I see whether you're doing it or not? Okay, anyway. Those I'm happy that you're on the camera. So let's start. So if you can stand up, I want you to stand up in your place. Okay? If you can all stand up, please stand up in your place. If it's difficult, you can sit down, no issues. But standing up is better. Okay? Ready? I'm going to call out 3 words. 3 words. Okay? And for each word, there is going to be an action. You have to do an action. Each word, what action to do. Got it? And then I'm going to keep calling out those words and I'll see whether you're doing the right action. Are you all ready? Okay. So the first word I'm going to say is lion. When I say lion, you're going to say like that. You're going to jump up. Can you do that for me? Let's see if you can do that. Lion. How does a lion pounce? Jump and pounce. Jump and pounce. Yes, come on. There's no energy. Come on. Okay. And then I'm going to say mouse. And when I say mouse, you're going to go like that. How are you going to go? Like this. And when I say butterfly, you're going to do? You're going to fly like a butterfly. Okay? You all ready? You all ready? Okay, chalo. Let's start. I'm all excited to see what you're going to do. Please do switch on the cameras. Okay? Okay. Lion. Lion. Come on. Jump up and pounce. Lion. Jump up and pounce. Lion. Mouse. Mouse. Come on. Mouse.
Then butterfly. Butterfly. Come on. Butterfly. Mouse. Mouse. Lion. Jump up. Jump up. Jump up. Lion. Mouse. Come on. No damage. Come on, fast. Let me see who can do it better. Call it now. Okay? Lion. Mouse. Butterfly. Lion. Mouse. Butterfly. Shall I do it again? Butterfly. Butterfly. Mouse. Mouse. How does the mouse go like that? Lion. Go. Me. Come on. Lion. Yes. Lion. Mouse. Butterfly. Lion. Mouse. Butterfly. I'm seeing all mixed actions. All of you so confused. Isn't? Let's see. One last time. You're going to try and see we're going to get it right. Lion. Mouse. Butterfly. Somebody's dancing and all. They're making their own actions here. Huh? Okay. Anyway. Good work. Good work. The whole point was for you all to get energized. You know, I didn't want you to sit down like that. Okay. So all energetic now. Yes. Oh, somebody is saying converse in Hindi. Okay. It's okay. Ma'am, I'm here with you to converse in Hindi, whatever you require. Okay, fine. Thank you so much. You probably some things you can translate. This is fine. Yes. Yeah. Okay. So now all of you can sit down, settle down in your places. I'm sure your teachers are going to scold me now. They would have made you sit down and I asked all of you to get up. Thank you, teachers. I'm so sorry. Okay. I just wanted to have some energy in the group. Yes. Okay. Ready? Chalo. So now, just as Mansi ma'am said, my name is Sangeeta and I love telling stories to children. Okay. So today we're going to talk about stories and storytelling and how stories are important for a speaker, for how it will make you a good speaker, a good communicator. आज का topic क्या है? Public speaking है ना? तो public speaking क्या होता है? You have to speak in front of people, right? So when you have to speak, you want people to listen to you, right? जब मैं आपसे बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो आप मुझे क्या चाहिए? You look at me, you understand me, right? So stories will make your speech interesting. Okay, and that is why it is important to learn about storytelling. So that is what we are going to do today. Learn about storytelling. What is storytelling? Okay, I'm going to ask you a question. When do you think storytelling started? When did storytelling started? When did stories start? कब शुरू हुआ storytelling? कहानियां कब शुरू हुआ और शुरू हुई? I'm so sorry if my grammar is wrong. I'll try. Okay. I can't see any answers in the chat box. Can anybody tell me when did stories start? Storytelling. कहानियां कब शुरू हुई? No? Okay. When came on this earth? Okay, when the first human being came on this earth, first man, first woman, when they came on earth, stories started that day. Okay. So when in the beginning, people did not have language. Yes, caveman, somebody is saying it correctly. People did not have language. They did not speak. Then how did they? They would draw cave drawings. Have you seen cave drawings? Can I share thing? Can I share one picture? One second. Yes, ma'am. You can share your screen. Okay, one second. Yeah. बच्चों जल्दी अपने कमेंट्स में लिखिए स्टोरीज लिखना कब स्टार्ट हुई स्टोरी आपको क्या लगता है? Do you see? These are called cave drawings. Cave, गुफा. You know, पहले आदमी गुफा में रहते थे, तो तब उन्होंने they used to draw in the cave.
why did they do drawings? Because they wanted to tell people what they did during the day. Okay, क्या किया उन्होंने, पूरा दिन क्या किया, so वो सब उन्होंने drawing के रूप में किया, cave drawings. Okay, so that is when the first story started. Then when people started speaking, जब बोलना शुरू किया, जब develop, so people started telling stories to each other. What are stories? It is just sharing of experiences. Okay, you know what happened today? Today when I was coming back from school, जब मैं school से वापस आ रही थी, मैंने क्या देखा, एक छोटा सा पपी, वो भी कहानी है. तो ऐसे शुरू हुआ. No, that is how story started. To about your day, so they started telling stories. Then they wanted to answer some questions like, no, why is the sun high up in the sky? सूरज क्यों ऊपर है और चांद क्यों white color में है? Why is the sea blue? So many questions. They made gods and they had stories about Krishna, Ram, Jesus, Allah. They had stories about all these people. So and people started telling stories. Then when they started, people started writing stories. Okay. After writing stories, books got printed. So when printing started, people, now you have books, no? किताबें में कैसे आता है? प्रिंट है ना, प्रिंट तो आप पढ़ते हो. Okay, so जब print हुआ तो print stories got printed. And finally now how do you watch stories? What do? We watch a lot of videos, right? अभी हम videos देखते हैं. आपके film making class में उन्होंने बताया ना कैसे those. So that is how finally we are here. Now we have everything. Okay, we have drawings, we have oral storytelling, we have video storytelling, we have written stories. सब कुछ है अभी. So that is how stories started. Stories started as a way of expressing what you did in the day. क्या किया आपने पूरा दिन, इस ऐसी story शुरू हुआ. Okay. Now, so will you agree with me? We are all surrounded by stories. Right? Surrounded माने, can you explain that? Can you explain that in Hindi, please? हमारे पास जो भी हम देखते हैं सब कहानियां ही होती हैं. जैसे हम स्कूल से आते हैं, हम किसी को कुछ कहते हैं, आज स्कूल में क्या हुआ, मेरे टीचर ने ये मुझसे बोला, मैंने स्कूल के सामने एक छोटे से पपी को देखा या फिर एक किटन को देखा. जो भी कहते हैं, हम सबके आसपास एक कहानी होती ही है. Right? So अभी क्या okay, आप न्यूज देखते हैं, you see news, that is also story. Okay, आप कार्टून देखते हैं, वो भी स्टोरी है. आप मूवीज देखते हैं, वो भी स्टोरी है. आप बुक्स पढ़ते हैं, उसमें भी स्टोरी है. तो आप किसी से कुछ बातें करें, कुछ बता रहे हैं आपने, वो भी तो हम स्टोरी से घेरे हुए हैं. ओके, वी आर ऑल सराउंडेड बाय स्टोरीज ऑल द टाइम. ओके, वी आर ऑल नेचुरल स्टोरी टेलर्स. हमारी जिंदगी भी एक स्टोरी है. ओके, इफ समबडी आस्क यू व्हाट यू आर, हु यू आर, हम सब स्टोरीज हैं. हम एक किसी को अपने बारे में बताओगे, वो भी स्टोरी है. सो वी आर ऑल, that is why stories are very, very, very important. Now we are going to do a small activity. Okay, why, I'll tell you why we are doing this activity. So how many of you like listening to stories? How many of you like listening to stories, or do you like watching stories? वीडियो देखना पसंद है, सुनना पसंद करते हैं? क्या पसंद है? चैट में लिखिए, क्या पसंद है? सुनना पसंद है या देखना पसंद है? वॉचिंग स्टोरीज, बोथ. ठीक है, तो देयर इज, ओके, सुनना. Okay, okay, fine. Now I'm going to do a small activity, and I want you to, then I'll tell you why I did that activity. Okay, first let's start. So I'm going to tell a story in English. Okay, it's a very short story, but for that I want you all to close your eyes. Okay, आप सब अपने आंखें बंद करो और सिर्फ सुनो. नो डिस्ट्रैक्शन. सब आंखें बंद करो, चीटिंग. सब आंखें बंद करो और जैसे मैं स्टोरी बोल रही हूं, एज आई टेल द स्टोरी, लिसन.
and make your own picture in your mind. Okay, इसमें वीडियो नहीं है, तो आप खुद की पिक्चर, खुद की वीडियो कल्पना करो, ठीक है? So let us start. Close your eyes. I'm still saying open eyes. Close your eyes, all of you. I should open my eyes. I'll keep my eyes open, but you have to close your eyes. Can you do that? Okay, listen very carefully. Then I'm going to ask you questions, okay? That is why I'm asking you to close your eyes. Okay. The school bell rang. School, okay? And left her school to go home. It was sunny and it was very hot when she started. She walked slowly as she was very, very tired. She had walked about a kilometer. उसने 1 किलोमीटर walk कर लिया. Okay. When she saw clouds in the sky, it was becoming cloudy. There was no more sun. A gentle breeze began to blow. Okay. And she felt the breeze on her hands, on her body. It was a gentle breeze. Okay. हवा, थोड़ा सा ठंडी हवा आने लगा. Okay. She passed a house which had different colored flowers. There were so many different types of flowers, and there were a lot of butterflies also. And she could see some birds also. Okay. She could smell the roses. She could smell the jasmine flowers. उनकी खुशबू ऐसे when she was passing the house. Okay. And what happened? By now, those white clouds had become dark clouds. They became dark clouds, heavy clouds. And kya hua? Nina suddenly felt a drop on her hand. Then another drop. Then another one. She looked up. It started to rain. So what did she do? So she picked the umbrella from her bag. She searched for it inside her bag. She picked it out. She tried to open it, but it would not open. वो umbrella है उसके पास, पर वो खुल नहीं रहा था. तो क्या किया उसने? And it had started raining. So she looked here and there, and she saw a house with an open gate. She ran into the house and she stood on the veranda. Okay. She ran. So she was breathing. And then she saw a dog. She saw a cat. And what happened? The dog was not tied. It looked at her and it growled as if it was going to pounce on her. जैसे वो उसमें, he was angry. There was a new person in the house, right? Just then, a woman from inside the house came in and she said, Tony, sit. Okay. So कहानी समझ आया? कहानी समझ आया? Did you all understand the story? Yes? Can you give me a thumbs up if you understood the story? Okay. Now I'm going to ask you some questions and I want you to quickly put your answers in the chat. Will you do that? Okay. Now, आप सभी ने इमेजिन किया, कल्पना किया मीना के बारे में. मीना क्या कर रही थी? वो एक दिन स्कूल से वापस आ रही थी, तो क्या हुआ? बारिश शुरू हुआ और जब वो आ रही थी उसने क्या क्या देखा? उसने कुछ फूल देखे, बटरफ्लाइज देखा, बर्ड्स देखा. उसका ट्राई टू ओपन हर अम्ब्रेला, वो खुल नहीं रहा था, तो वो एक घर के अंदर गई और वहां एक कुत्ता था जो टाई नहीं हुआ था, तो वो उसको देख के ऐसे घूर रहा था उसको देख के. ठीक है. तो यही कहानी थी. ठीक है. जैसे मैंने बोला यही कहानी. तो आप मुझे यू टेल हाउ लॉन्ग वाज नीनाज हेयर. कितने लंबे थे उसके बाल? क्या आपने कल्पना किया? आपके कल्पना में मीना के बाल कितने लंबे थे? छोटा था या बड़ा था? रिबन डाला था? क्या किया था उसने? कुछ भी बता सकते हैं. शॉर्ट हेयर.
छोटा बाल, कुछ और, ओके, पोनी टेल, ठीक है। तो देखा कितने 3 टाइप्स ऑफ आंसर्स, 3 आंसर्स आ रहे हैं, लंबे बाल, ठीक है। उसका बैग का कलर क्या था, उसका बैग का कलर क्या था, 2 प्लैट्स, ओके, बैग का कलर क्या था, ब्लैक, पिंक, शॉर्ट, बैग का कलर क्या था, ब्लू, ब्लैक अगेन, रेड, ओके, बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। और क्या हुआ, आप जब फूल देखा, कौन कौन से फूल देखा आपने, कौन से कलर्स देखा फूल में, मैंने बोला रोजेस था और भी बहुत सारे फूल थे वहां, तो क्या 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 कलरफुल देखे आपने, येलो, व्हाइट, ओके, हाँ, तो बटरफ्लाइज भी देखा होगा आपने, तो बटरफ्लाइज में क्या क्या कलर था, ओके, ब्लू, मेनी कलर्स, ओके, रेड, ओके, उसका 3, वो अम्ब्रेला जो वो खोल नहीं पा रही थी, वो क्या कलर था, ब्लू, ब्लैक, रेड, ब्लू, पर्पल, रेड, ओके, येलो, ओके। नाउ द डॉग, आपने सब कुत्ता देखा अपनी कल्पना में, को बड़ा कुत्ता कुत्ता था, और वाज इट शॉर्ट, कैसा था वो, अभी भी कलर्स बता रहे हैं, वो बिग एंड टॉल, बिग, टॉल, ठीक है, स्मॉल, ओके, ओके, फाइन। सो नाउ तो व्हाई डिड आई डू दिस एक्सरसाइज विथ यू, मैंने क्यों किया ऐसे, मैंने स्टोरी आपको, मैंने कहानी सुनाया और मैंने बोला अपने आप कल्पना करो। यही होता है जब आप स्टोरी सुनते हो, ओके, सुनते हो तो क्या होता है, आपके दिमाग में कल्पना आती है उस स्टोरी का, सो यू स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग इन द ब्रेन, ओके, सो यू बिल्ड कनेक्शंस इन द ब्रेन, तो आपका क्रिएटिविटी बढ़ता है, इमेजिनेशन बढ़ता है। वर्सेस अभी इसी कहानी को अगर मैं वीडियो, इफ आई शोड इट टू यू एज अ कार्टून, ओके, और अ वीडियो, क्या होता था, सब लोगों के लिए मीना विल बी द सेम, राइट, सेम लेंथ ऑफ हेयर, किसी ने बोला पोनी टेल है, किसी ने बोला लंबे बाल है, किसी ने बोला छोटा बाल है, किसी ने बोला येलो ब्लैक है, ब्लू बैग है, करेक्ट। तो अगर हम मैं वीडियो में दिखाती थी वो कार्टून शो की तरह या मूवी की तरह, क्या होता था, आप सबको एक ही मीना दिखती थी, एक ही कलर बैगी, एक ही टाइप कुत्ता, राइट। सो आपका इमेजिनेशन नहीं है इसमें, जो उसने वो फिल्म किया था, मूवी किया था, उसका इमेजिनेशन होता है, आपका नहीं। सो दिस इज व्हाई it is important to oral storytelling is important. So the same thing when you do speaking, अब speaking में करते हो ना, when you do it in public speaking, that's what to capture the attention. So अभी मैंने जब बोला आपका attention, सारे के attention story पे था, right? All your attention was on the story. So that is why it is important. Oral storytelling plays a very important role in speaking with the listeners. Okay. Okay, still people are asking, ma'am, please Hindi. Sorry, ma'am, see, this is the maximum. I hope most of them are able to understand. Can you just check quickly whether they're able to understand? Sure. तो बच्चों इंग्लिश की बात करेंगे, अगर आपको किसी भी चीज में रेपिटेशन चाहिए या रिपीट कर सकते हैं हम जरूर करेंगे, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क मी एंड आई विल आंसर राइट नाउ। I think we can some stop and address. Yeah. Okay, fine. So now you understood how storytelling, oral storytelling plays a role versus a story by a video. Abhi, so what is a story made up of? स्टोरी कैसे बनता है, क्या है स्टोरी में, आपके फिल्म मेकिंग क्लास में भी था एक ये क्वेश्चन, ये फिल्म क्या होता है, फिल्म ये होता है, राइट, सेम सिमिलर, इट इज फ्रॉम दिस ओनली, ओके। सो व्हाट इज इन अ स्टोरी, व्हाट इज अ स्टोरी मेड अप ऑफ, मैम प्लीज टेल अनदर स्टोरी, आई टेल यू अनदर स्टोरी, ओके, विल डू टुवर्ड्स द एंड, ओके। हाँ, तो स्टोरी में क्या होता है, क्या है स्टोरी में,
like making some, say it's like making a dish, like a paneer butter masala. Okay, it's a dish. उसमें क्या क्या जाता है? आप जब पनीर बटर मसाला, when you're cooking it, क्या क्या डालते हैं उसमें? पनीर डालते हो या उसमें क्या, ऑनियंस, टमाटर सब डालते हो ना? तो क्या होता है? हाँ, ओके। और क्या होता है स्टोरी में? स्टोरी कैसे बनता है? बनाने के लिए ओके इमेजिनेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ओके वो सब ठीक है। तो वो इट इज मेड अप ऑफ समथिंग। एक हर स्टोरी यही फॉर्मेट में जाता है। मैं बोलूं? ओके, ठीक है। पहली एक फर्स्ट इंग्रेडिएंट, व्हाट डू यू पुट इन द स्टोरी? स्टोरीज में क्या होते हैं? Ideas. क्या, व्हाट आर द मेन पार्ट्स, व्हाट इज द मेन थिंग इन अ स्टोरी? विदाउट दैट देयर इज नो स्टोरी। क्या होता है? आइडिया, एक्शन, ओके, कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स क्या है? जो मैंने अभी स्टोरी बोला ना, सुनाया, स्टोरी सुनाया, उसमें कैरेक्टर कौन था? मीना। मीना वाज द कैरेक्टर, राइट? हाँ, राइट। सो स्टोरी में पहले क्या आता है? स्टोरीज में कैरेक्टर्स। हम बहुत सारे, एक कैरेक्टर और एक ज्यादा डाल सकते हैं। स्टोरीज में क्या होता है? कैरेक्टर्स। ओके, फिर क्या डालेंगे? फिर स्टोरी में होगा सेटिंग। सेटिंग, सेटिंग क्या होता है? अभी मैंने जो स्टोरी बोला उसमें सेटिंग क्या था? इट वॉज अ रोड, राइट? वो रोड था, तब वो स्कूल से वो घर जा रही थी, रास्ते, वो रोड है ना, वो स्कूल, रोड, रास्ता, और वो घर जिसमें वो जाके वेयर शी टुक शेल्टर फ्रॉम रेन, गार्डन, वो सब सेटिंग है। क्या है वो? सेटिंग है। तो स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग होते हैं। तो फिर कहानी में मजा कैसे आएगा? कहानी में मजा कैसे आएगा आपको? सारे कहानी में मजा आने के लिए क्या डालेंगे हम? उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स डालेंगे, ठीक है? एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम, कितने भी, एक मिनिमम एक चाहिए। और तो कहानी में यू नीड प्रॉब्लम्स, ओके? प्रॉब्लम्स चाहिए, कुछ मुश्किलें चाहिए, हीरो को कुछ कुछ से तो लड़ना पड़ेगा ना एंड में जीतने के लिए, तो कुछ तो चाहिए। तो स्टोरीज में प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स डालेंगे। फिर क्या डालेंगे? तो प्रॉब्लम्स हो गए, तो फिर क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को फिर सोल्यूशन, सॉल्व करना है ना। तो कौन सॉल्व करेगा प्रॉब्लम्स को? कौन सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को? हाँ, कौन सॉल्व करेगा? हीरो। नॉट ओनली हीरो, इट कैन बी ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। कोई भी कैरेक्टर सॉल्व, तो जो होते हैं उसमें हीरो ही सॉल्व करते हैं। तो हम किसी कैरेक्टर्स, जो भी है कैरेक्टर्स है, वो सब पार्ट होते हैं वो स्टोरी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और प्रॉब्लम्स करने वाले भी कैरेक्टर्स ही होते हैं, ठीक है? जो प्रॉब्लम्स हम, विलन है, कैरेक्टर है, प्रॉब्लम्स करता है, करेक्ट? सो अ स्टोरी विल हैव अ हीरो, प्रॉब्लम्स करेगा, हीरो कैरेक्टर सॉल्व करेगा, ठीक है? सो प्रॉब्लम्स होगा, सोल्यूशन होगा, और ओके ये सब हो गया। तो फिर क्या होगा? इस सबको यू हैव टू टेक इट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एक्शन इवेंट्स, ओके? पहले इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन होगा, फिर आप धीरे धीरे से प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसमें बोलेंगे अच्छा ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो फिर पीपल विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, वो भी कहानी का मेन पार्ट होगा। वो मिडिल पार्ट बोला ना कहानी में, वही है। फिर आते हैं, तो फिर एंडिंग कैसा होगा? जब सोल्यूशन आता है, सोल्यूशन आता है और फिर कहानी खत्म, करेक्ट? एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, राइट? हम सारी स्टोरी में सुनते हैं एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, ऐसे आता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर हैप्पी, सब हैप्पी, सोल्यूशन हो गया, तो इट हैप्पी, राइट? इट कैन बी अ सैड एंडिंग, इट कैन बी सस्पेंस एंडिंग। अभी आप जो वेब सीरीज देखते हैं ना, किसी ने फैमिली मैन ऐसे वेब सीरीज देखा है? देखते हैं वेब सीरीज? नहीं, ठीक है? उसमें क्या होता है? पहले पार्ट आता है, उसमें जो एंडिंग होता है उसका एंडिंग नहीं है, दूसरी
कहानी होती है, ठीक है। फिर उसने व्हाट इज द फिल्म और द स्टोरी टेलर, ही केप्ट यू इन अ सस्पेंस। उसने प्रॉब्लम्स खत्म नहीं किया, जब कहानी खत्म हो रहा था एक दूसरा प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस किया और बोला हम इसके सोल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में देंगे, ठीक है। सो मेड अप, दैट इज व्हाट होल्ड्स पीपल्स इंटरेस्ट। अभी छोटे बच्चों के लिए, जब आप 3 साल या 4 साल के बच्चे के लिए इतने प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं होते, बस सिर्फ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, सो उनके लिए नहीं चाहिए, ओके। पर जो भी स्टैंडर्ड कहानियां हम जब सुनते हैं देखते हैं, ये सब ऐसे ही ऑफ अ स्टोरी, उसमें कैरेक्टर क्या था, सेटिंग क्या है, प्रॉब्लम क्या था, सोल्यूशन क्या था। किसी को एक एक सॉरी, जो भी आप कहानी पढ़ा है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या। ओके, एक मूवी का नाम लेते हैं, ठीक है। आप दंगल मूवी देखें, दंगल, राइट। दंगल मूवी में कैरेक्टर्स कौन है? नो, ओके ओके, जो भी मूवी आपने देखा है उसका उसका बताए। गीता, ओके, आमिर खान, ओके। दो रेसलर्स एंड उनके पिताजी, पिताजी वाज द मेन कैरेक्टर, राइट। ही वांटेड हिज डॉटर्स टू विन द, सो क्या था प्रॉब्लम उसमें? उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं था, एक गोल था उसमें। ही वांटेड हिज डॉटर्स टू विन द मेडल, राइट। ही वांटेड देम टू विन द मेडल, कॉमनवेल्थ गेम में वो मेडल है ना, वो ओलंपिक, वो विन करना, दैट इज व्हाट हिज गोल वाज। सो दैट वाज, एंड द प्रॉब्लम, देयर वाज आल्सो अ प्रॉब्लम दैट रेसलर his daughter stopped practicing properly, वो प्रॉब्लम था, राइट। एंड देन सोल्यूशन क्या था? पहले का, he was practicing a lot, he made his kids practice a lot, run every day, हर दिन दौड़ते थे, करेक्ट, हर दिन इतने किलोमीटर दौड़ते थे, वो ऐसे एक्सरसाइज करते थे, ऐसे प्रैक्टिस करते थे, तो वो था उन बनने के लिए प्रैक्टिस ही था। तो वो सारे मूवी में ऐसे ही था, विन करना है, वो ही गोल था। प्रॉब्लम था कि वो विन करना है, और सोल्यूशन था कि हाउ टू विन, सो प्रैक्टिस एंड देन फाइनली दे वन, राइट, जीत गए, राइट। तारे जमीन पर, किसी ने देखा है तारे जमीन पर? क्या तारे जमीन पर क्या प्रॉब्लम था? क्या कौन से कैरेक्टर से? वो छोटा बच्चा, राइट, आई फॉरगॉट हिज नेम, दैट एंड देन द टीचर आमिर खान, and then the small boy's brother, mom, dad, they were characters. स्कूल था, पहले एक स्कूल था, फिर एक बोर्डिंग स्कूल था, राइट। और फिर प्रॉब्लम क्या था? वो छोटा बच्चा, ही कुडंट रीड एंड राइट, राइट, उसको डिसलेक्सिया था, वही प्रॉब्लम था। सोल्यूशन क्या किया? आमिर खान ने उनको ट्रेन किया, वो डिसलेक्सिया होके भी कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उसका सोल्यूशन निकाला। मूवी देख ले जाते हैं ना, पहले कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, फिर प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया, फिर सोल्यूशन, फिर कहानी खत्म हो गया, राइट, लाइक दैट। So if it like, let's take a very simple story. Now I'm taking movie stories. Let me take a very simple story. Thirsty Crow सबको पता है? Thirsty Crow का story? Thirsty Crow? Yes? No? Thirsty Crow. वो is there a word, name in Hindi? Mansi, I don't know. Okay, Thirsty Crow. People are saying yes. Thirsty Okay. crows, yeah. Thirsty Crow story में क्या होता है? That crow is very thirsty. उसको पानी चाहिए था. तो एक ही कैरेक्टर था, राइट। थर्स्टी क्रो में एक ही कैरेक्टर, वो है क्रो। क्या प्रॉब्लम था? उसको बहुत गला सूख रहा था, उसको पानी चाहिए था, राइट। ही वांटेड वाटर, एंड सो डिड ही फाइंड वाटर? ही फाउंड वाटर। पर क्या हुआ था? वो एक पॉट में था और बहुत दैट वाज अनदर प्रॉब्लम। सो व्हाट डिड ही डू? ही टुक स्टोन्स फ्रॉम नियर बाय, ही पुट इट इन द वाटर, ऐसे ड्रॉप किया तो पानी ऊपर आया और वो पी के चला गया, करेक्ट, हैप्पी हो गया। तो सोल्यूशन था क्या था? वो पेबल्स डालना, करेक्ट। इफ यू लुक एट एनी, ठीक है, राइट।
समझ आए? तो स्टोरी में क्या होता है, पहले हम डालेंगे कैरेक्टर्स, फिर डालेंगे सेटिंग, फिर डालेंगे प्रॉब्लम्स, सोल्यूशन, और फिर ओके एक ऑर्डर में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. Okay, so यही है story. So if you want to, if whenever you read a story, so today what you go do, if you read a story, there are a lot of stories in story weaver. We can introduce that to them now. Okay, so maybe we'll pick some stories from Yes. story weaver and let them read it, like after the 2 days also, no? They could see a story in this structure. They can do that. Okay, तो आप जो भी स्टोरीज अभी अभी सुनेंगे देखेंगे सब, you have to remember story. Even if you're telling a story, you have to remember this structure. Okay, okay, very nice, man. Okay, so abhi so now we've done this. I want to be one sec. Okay, now I want you to remember 2 words. Okay, can you remember that for me? Stories stick. Okay, story stick. मैं टाइप करती हूँ उसको. So I'll explain this to you what it means. Stories stick, like glue stick, right? Stories stick. जैसे glue जोड़ता है, story. Okay, so we'll see what it means. Okay, I'm going to tell you one more story to explain this. See, now what am I doing? I'm doing a kind of public speaking because you're my audience. Speaking, I'm telling you, explaining to you through stories. Is that not interesting? When you hear a story, you can understand better, right? So that is what I am also doing now. So this is an example of how you can use stories in your speaking. When you're speaking when you're making a presentation, अभी class में कुछ किसी को stories to teach them. Okay, you can use stories to present. Okay, so I'm going to tell another story. Okay, I'll try to tell it in Hindi as much as possible. I'm not sure. Okay, let's see. Okay, I'll start with English. If you don't understand, tell me. I'll explain it in Hindi. Or Mansi, you can do the translation. Okay. So today, now I'm going to tell you a story about Priya. I'm going to tell you a story about Priya. Who's Priya? Priya actually lived in a town in India. And who was Priya? Priya was a beautiful cow. Beautiful, healthy cow. She had nice, shiny brown skin, dark brown, and beautiful white spots she had. Okay, she had beautiful white spots and shiny brown skin, and she gave healthy milk. And the children in that area, no, they loved her. They used to come and play with her every evening, and then they used to drink milk, her milk, whatever she gave. They used to drink her milk, so they had a lot of fun with her. And he was a boy studying in 3rd standard, and Tina was a little girl also studying in 3rd standard, and they both were Priya's best friends. Okay, who's Priya? Cow. Priya was the cow, and Priya's best friends were Tina. Now, one evening, Tina and Ravi came to visit Priya. But Priya was lying down. Okay, they tried to wake up Priya. Come on, get up, Priya. Priya, come on, come play with us. Priya said, sorry, Tina and Ravi. I'm very, very tired.
My stomach is paining. मेरा पेट दुख रहा है. That's what she said. Okay? मेरा पेट दुख रहा है. I cannot get up. I cannot get up. I'm so sorry. And yes, what? Your it is paining? Do cows have stomach pain? I have not heard. And then Priya says, no, really, I have a very bad stomach ache. Please help. So what do Ravi and Tina do? Okay. Priya, don't worry. We'll call the doctor. So they call the doctor. The doctor came in a big van. Okay. Why did she come in a big van? Because she was carrying a big X-ray machine with her. X-ray machine आप सब जानते हैं ना? तो डॉक्टर ने एक बड़ी सी एक्सरे मशीन एक बड़ी सी वैन में डाल के उनको लेके आए. Okay, to where Priya the doctor came. Then she came and as all doctors do, एक स्टेथोस्कोप डाला और उसने चेक किया प्रिया को. और फिर क्या किया? एक्सरे मशीन को निकाला और she took an X-ray of Priya's stomach because Priya was having a stomach pain. पेट दुख रहा था ना, उसका एक्सरे किया. और क्या देखा? डॉक्टर ने कहा, what? You have so much of plastic in your stomach. And Priya said, is it, doctor? What do I do? It is paining very badly. And doctor says, don't worry. Stop eating plastic. For now, I'll give you an injection. मैं injection ठीक, but don't eat plastic. And then the doctor left. Now Ravi and Tina vegetable peels, fruit peels. What is this you're eating? And then Priya said, oh my Tina and my Ravi, you know what happened? You know, I don't get grass all the time. And sometimes when I go for walks on the road, I see these big garbage dumps where there are nice fruits, peels, or food, and then it is mixed with a lot of plastic like chocolate wrapper, uh, chips wrappers, chips covers, plastic boxes. So when I go to eat food, the tasty vegetable peels and fruit peels, my fingers, I can't separate them. So I eat plastic along with the food. That is what is happening. And that is why the plastic went into my stomach. So प्रिया क्या कर रही थी? जब वो रोड में रास्ते में जा रही थी, जो भी कचरा का डिब्बा था ना, बड़े बड़े कचरे के डिब्बे होते हैं, उसमें क्या होता है? वो कचरा होता है, उसमें उसको मिलता है वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, एंड उसके साथ क्या होता है? प्लास्टिक कवर्स भी है, रैपर्स भी है, चिप्स पैकेट भी है. तो जब यू हैव सीन, आप यू पीपल हैव श्योरली सीन दैट हैपन ऑन द रोड, राइट? आप देखते होंगे डॉग्स from the garbage that has been thrown on the road. So that is what was happening. So Ravi and Tina now said, oh, is that so? What do we do for you? And then they thought they had to come up with an idea. So they said, Priya, don't worry. We'll go to our friends. We will think of an idea. And they all went to their friends and they all sat like small kids like you. They sat and discussed, what do we do? What do we do? How do we solve Priya's problem? How do we make sure that she does not eat plastic when she eats food from the garbage dump? क्या कर सकते हैं वो? कुछ आइडिया है आपको? किसी को कुछ सूझ रहा है? क्या कर सकते हैं? Any idea from anybody? If you are Tina and Ravi, what would you do? कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को? यस, सेपरेशन. तो अभी कूड़े में जाके सेपरेट कर सकते हैं? नहीं ना? कहाँ सेपरेट करेंगे? Yes, right. So that is what Ravi, Tina, and their friends thought. Okay, so let us go tell everybody in the town to separate the waste when they throw it. So they gave a blue bin, a green bin, and a red bin. A green bin for food waste, a red bin for plastic waste, and a blue bin for other waste like cardboard or whatever.
So they separated the waste. So what did? They went around the town. They took all their friends' help. They told everybody, every house they went to and said, uncle, auntie, please, can you help us? Can you do this for us? And then they went, put up posters everywhere. Please don't mix waste, separate waste. And they put instructions for everybody. And they also told, there'll be people coming and collecting the waste. घर से waste जो लेके जाते हैं, उनको भी बोला, please don't mix. आप separate big डब्बास रखिए उस वहां, नो की big डब्बा, so these waste can be, घर से separate हो गया तो उसको separate भी डालना पड़ेगा ना, so you have to separate it out and put it. So please वो कीजिए. So they went and requested everybody and they made sure everybody did this. And within a month, what happened? Everybody started doing this. The city became, the town became clean. Not only that, now since plastic was going separately, cardboards were going separately, they were getting recycled. So people were sending it for recycling. So वो भी हो गया. और अभी प्रिया का problem भी solve हो गया. Priya, when she goes out, she doesn't have to eat food, plastic waste along with food waste. She gets only food waste, right? So when this happened, they were all so happy. They felt, wow, we did it, right? So through this, and then Priya, Ravi, Tina, and all the kids lived happily ever after. Happy ending. Okay? So क्या होता? So you saw the story. We followed all the structure we had, no? Characters था, setting था, problem था, solution था, happy ending था, right? And ending था, और ये सब जोड़ के हमने एक कहानी बनाया, right? So remember I told you 2 words, stories stick, right? So now, whenever you think of, suppose you have to teach kids, small kids younger than you about separation of waste, okay? अगर आप और किसी और को आप बताना चाहते हैं तो वो अभी maybe the teacher told you or the school told you, can you talk about waste management के बारे में बोल सकते हैं? तो क्या करेंगे अगर आप जाके कहेंगे yes, we should separate waste, we should separate plastic waste and food waste and other waste into separate bins, we should not mix it, ऐसे जाके कहेंगे तो उनके दिमाग में स्टिक करेगा? वो थोड़ा मुश्किल है याद रखने के लिए, right? It's difficult to keep it in memory. But जब आप ये कहानी बताएंगे, everybody will remember Priya the cow, right? Everybody will remember what happened to Priya. And then when they throw waste, when they look at waste, they will think, oh, if I do this, animals will get affected. Okay, I should not do this. Stories stick to your brain, to your mind. It makes a change in your behavior. So public speaking से क्या होता है? Public speaking क्यों करते हैं हम? किसी पे असर डालने के लिए, किसी को कुछ नया सिखाने के लिए. So what is better than storytelling? To tell people, to explain to them, to make a change, to teach them something new, right? अच्छा लगा story? अच्छा लगा? So now you understand why I said stories stick. So stories stick whatever we want to learn into our mind so that we never forget it. It is like glue. Remember stories as glue. आप जब भी movies देखते हो ना, सब याद होता है आपको, right? Movies जब हम देखते हैं, we remember movies, and if it is interesting, it has to be interesting, okay? Boring कहानी भी सुना सकते हैं हम. अभी कुछ मसाला, कुछ वही नहीं डाल के कुछ ऐसे ही स्टोरी बताएंगे तो वो याद नहीं रखेंगे. उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है. यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग. मूवीज को भी इंटरेस्टिंग करना पड़ता है, ठीक है? तो जब वो आप इंटरेस्टिंग करोगे, द वे यू टेल इट, दैट आई विल टेल यू टुमारो. हाउ टू मेक स्टोरीज इंटरेस्टिंग इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुमारो. ओके, व्हेन आई डू दिस यू विल नो हाउ टू मेक स्टोरीज इंटरेस्टिंग. ओके, सबको समझ आया आज का सेशन? अच्छा लगा? ठीक है. तो क्या हमने बोला, वी टॉक्ड अबाउट हाउ स्टोरी स्टार्ट, हाउ स्टोरी स्टार्टेड, व्हाई इट स्टार्टेड, ओके? एंड देन कैसे हम सब, देयर आर स्टोरीज एवरीवेयर अराउंड अस, एवरीथिंग, एंड वी आवरसेल्व्स, ईच वन ऑफ इज अ स्टोरी. हम सब स्टोरीज है. हम सब में एक कहानी है. ओके, वी आर स्टोरीज, वी टेल स्टोरी, सो वी आर ऑल स्टोरी टेलर्स, राइट? हमारी जिंदगी भी एक प्ले की तरह, एक मूवी की तरह है. ओके, इट्स लाइक अ मूवी, राइट? छोटे छोटे स्टोरीज से बनता है. हमारी पूरी जिंदगी छोटे छोटे स्टोरीज में बनता है. सो दैट इज हाउ स्टोरीज आर.
राइट। एंड स्टोरीज में क्या होता है, स्टोरीज में कॉम्पोनेंट्स होता है, स्टोरीज में कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग होती है, प्रॉब्लम्स होती है, सोल्यूशन होती है, और सबको जोड़ते हैं, तो यही स्टोरी बनता है। और फिर स्टोरीज मेक एन इम्पैक्ट, स्टोरीज स्टिक, they stick the what you want to learn to our brain, they impact the audience, right, they impact the listeners, and then it makes a difference. Okay, and that's why stories are very very important for speakers. Okay, so that is about today's session. I think I've covered everything that I wanted to cover. Okay, कुछ questions है तो आप पूछ सकते हैं. स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई क्वेश्चंस हो आप मैम को पूछ सकते हैं चैट सेक्शन में। हमने आज ये सीखा कि पब्लिक स्पीकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे इम्पोर्टेंट है। हम अगर ऑडियंस से बात करते हैं तो उसे पब्लिक स्पीकिंग कहा जाता है। एंड देयर इज नो बेटर वे टू गेट योर आइडियाज अक्रॉस। अपने पॉइंट्स को समझाना और किसी को अच्छी तरह से समझाने से कोई बेटर वे नहीं है दैन स्टोरी टेलिंग। इसीलिए हम स्टोरी टेलिंग के माध्यम से पब्लिक स्पीकिंग के बारे में और सीखेंगे। तो हमने सुना आज प्रिया के बारे में। प्रिया जो एक भूरे रंग की गाय है जो शहर में घूमती थी और फ्रूट, फल और सब्जियों के जो पील्स होते हैं उसको खाया करती थी, मगर उसके बीच में जो उसको प्लास्टिक मिला वो खा जाती है और उसको पेट में दर्द होता है। तो प्लास्टिक के सेग्रीगेशन, वेस्ट के सेग्रीगेशन को सीखने के लिए हमने इतनी अच्छी तरह से एक स्टोरी के माध्यम से सीखा है, एंड दैट इज व्हाट द आइडिया इज। सो आई होप कि आप सबको आज का सेशन बहुत पसंद आया हो। थैंक यू सो मच संगीता मैम, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग and everybody was so participative in the chat section with you. As we can see, they all enjoyed the stories a lot. So we will all meet tomorrow again to learn how to make the story important, जैसे मैम ने हमें बताया। So Okay, meet you all we tomorrow. learn some tips and techniques tomorrow. Okay, Okay, thank you all. Thank you ma'am, thank you so much. thank you so much. Bye bye, see you all tomorrow.